We will be just starting in 2 to 3 minutes when Unnati will join us. Hi Bhavna, I'm here. Yeah, hello Dee. You can share your screen now. Then I will introduce you and all. Actually, for this session, there is no need for a presentation. So I would be just telling about the methods and the resources that I'm gonna use. Yeah. Yeah, awesome. So, hello everyone. I hope you all are doing well and enjoying your winters as well. So, I hope so. This is our sixth workshop of Shebill's Hack. So, Shebill's is the India's largest diversity focused hackathon. We have packed up with awesome swags, networking opportunities, yes, as well as prize money as well. And you have an idea for building an app, website, hardware project, and all, don't worry, you can build in cheap bits. So also we have a surprise for all of you. We are giving up two mystery box for this workshop as well. One on the basis of the activity of the participants and all, and one randomly on the form that we will share anytime in between the session. And today we have Unnati with us. She is giving some her guidance on the particular topic. It's DevRel in its myth. So keep your question ready and learn something new in this particular session. So participate in hackathon and build some amazing projects. So now I would like to welcome Unnati in the session. And Unnati, can you please introduce yourself? Yeah, sure. So hello everyone, I am Unnati. Just a second, just a second. Just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes. I have to do something. Yeah, I'm back. My father called me, and you know what happens with them. So hello everyone. I am Unnati. I'm an SD one at Zomato. Previously, I was a developer at Asset Management, and I was a developer relations intern at Zentudy, which is an SRE platforms. And yeah, really glad to be here. And just a disclaimer that this is gonna be a real talk that I am going to talk about. So we'll take some of the examples, and yeah, you would be able to understand much more better and why you shouldn't do DevRel in first place, right? And that is a personal, you can say, experiences.
So like you can just imagine that no one is gonna be offended by this session. So yeah. So my journey started, so let's introduce कि मैंने DevRel कैसे करा and why I actually got into the DevRel as a career, right? So like my journey started when I was in my second year. Usually लोग second या third year में अपना chill, I hope everyone understand Hindi. And if you, in case you do not understand Hindi, do let me know in the comment section. I would love to switch to English, proper English. If any case. ठीक है, दिल से हिंदी अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे सबसे पहली बात, कम्युनिटीज में नो दीदी, नो सर, नो मैम और नो यू कैन से भैया। सो यहाँ पे सब मेरे को अपने नाम से बुलाएंगे, दैट इज उन्नति। सो एवरीवन इज लाइक आदत डालो कि वेन एवर यू मीट मी, सो ग्रीट मी बाय उन्नति, दैट इज माई नेम। सो लाइक मैं वहाँ पे थी, अपने सेकंड ईयर में थी। ठीक है, तो जब मैं अपनी सेकंड ईयर में थी, तो मेरे को लाइक उस टाइम पे लोग अपना एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कॉलेजेस या चिल कर रहे होते हैं। मेरे को पता नहीं कौन सी ऐसा मन करा कि नहीं नहीं, मेरे को तो करियर ओरिएंटेड बनना है, मेरे को अपने करियर पे फोकस करना है, तो मैं तो अपना ओपन सोर्स करूंगी। एंड मेरे को उस टाइम पे ओपन सोर्स का ओ भी नहीं पता था कि ओ लाइक करते कैसे हैं, कैसे पीआर बनाते हैं या कैसे रेस करते हैं। सो अगर यहाँ पे सबको कुणाल का तो पता ही होगा कि कुणाल कौन है। कुणाल कुशवाहा, जो एक डेवलपर एडवोकेट हैं एट लाइक हाँ हाँ, अपना भाई, हाँ हाँ, वो आपके भाई ही है। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड या उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट वहीं से मेरे को पता चला कि कुणाल um, कुणाल के थ्रू मेरे को ओपन सोर्स के बारे में पता चला। एंड मैं उस टाइम पे कोड फॉर कॉज की लीडर थी, नॉट अ लीडर, कैंपस लीडर थी, कैंपस एम्बेसडर थी। नॉट एज अ लाइक लीडर थी। तो वहां से मेरे को ओपन सोर्स के बारे में पता चला कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड कैसे लाइक अपना एक अच्छा रिज्यूमे या पोर्टफोलियो बना सकते हो। जब मैंने अपनी फर्स्ट पीआर रेस करी, दैट वाज इन second year only. The organization name was Public Lab, and like वहीं से जब पहली पीआर मर्ज हुई तो आई डेंट स्टॉप। मैं कहा अब तो यही करना है, इसी को ही अपना करियर बनाना है और इसी से आगे बढ़ना है। So second year was a like time second year was a time when मेरा LFX में भी हो गया था, which is Linux Foundation। या कमल, बैकग्राउंड में मेरी मम्मा है तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा उधर भी देखना पड़ रहा था। बट हाँ, दैट्स ठीक है। तो वहाँ से मेरे को ये था कि लिनक्स फाउंडेशन मेंटरशिप, विच इज़ लाइक वहाँ से आपको $2000 का स्टाइपेंड मिलता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड प्रोग्राम। एक सेकंड दोगे, एक सेकंड, बस एक सेकंड दो।
आई एम वेरी सॉरी यार, मेरा सेशन पता नहीं इतना डिले हो जा रहा है। एंड भावना मेरे को मारेगी, दीदी को बुलाया था और दीदी पता नहीं क्या कर रही है। यार मैं अभी शिफ्ट ही हूँ, आई एम न्यू टू द सिटी, तो फिर वही बात है कि व्हेन यू लिव इन लाइक वन रूम तो इट हैपेंस। हाँ, तो लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। मुझे मारने का नहीं भावना से, फटाफट इस सेशन को रैप करते हैं एंड देन आपका जब अभी यहाँ से कोई जीतेगा ही ऑब्वियसली। सो लाइक मेरा था उस टाइम पे, मेरा एलएफएक्स में हो गया था एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी कि चलो कुछ तो निकला। बिकॉज उस टाइम पे रिजेक्शंस ऐसे आ रहे थे कि लगातार, मीन्स you are being rejected from this program, you are being rejected from this program, and I was like कि नहीं dude, मेरे से टेक नहीं होने वाली, let's switch to another job. But LFX was a turning point, and to be very honest, it like it was a boosting experience wherein I I contributed to Open Horizon, which is machine learning workload agent. So my main task was to make the GitHub actions for that project, CI/CD, and also to like make certain text cases. So yeah, that was the main task. सो लाइक मोस्टली मेरे हिसाब से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन मेरे रिज्यूमे और पोर्टफोलियो से हुआ था, लाइक मेरे हिसाब से, बिकॉज अगेन कवर लेटर एंड रिज्यूमे वर द मेन, सॉरी, कवर लेटर एंड रिज्यूमे इन द पोर्टफोलियो, सो उससे मेरा हुआ था। एंड एक टर्निंग पॉइंट था, जैसे मैंने आपको बताया ही। उसके बाद आई यूज टू लाइक make videos. I'm founder of my own community, Codex Script. It's an open source community for developers who want to get started with open source and like journey like Outreach, LFX, GSOC, ये सब. So we give guidance to them. So उस time पे I used to take interviews and like call people on my YouTube channel. तो वहाँ से I got the like sense of creating content over YouTube, and code तो obviously कर ही रही थी because that was the main task. I used to do a lot of projects, real world projects, and yeah, community obviously संभाल ही रही थी, right? So these three is, अब उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया wherein I left my on campus internships. So let me give you the reason behind this. मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा था कि टेक इज नॉट फॉर मी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव हेल्पिंग पीपल, आई लव बीइंग अराउंड पीपल, एंड इसी वजह से मैं समझ रही हूँ तुम्हारे दिमाग के क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी तो एसडी बन गई, दीदी टेक 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 कर रही थी, टेक इज नॉट फॉर मी, टेक इज नॉट फॉर मी एंड डेवरल इज माय करियर, सो एकदम से एसडी कैसे बन गई, उसकी स्टोरी में बताऊंगी। बट अभी के लिए लाइक ये था कि मेरे को ये था कि मुझे टेक में नहीं जाना, एंड ऑल्सो लाइक जो था लाइक मैं बहुत ज़्यादा ही एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन थी, एंड आई एम ऑल्सो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, सो मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज लोग ऐसे बोलते थे कि यू शुड नॉट बी इन टेक, यू शुड नॉट डू बी टेक, और यू शुड नॉट कम टू कॉलेज. पीपल वर देयर हु वर बैक बचिंग अबाउट मी, बट मेरे को ये था कि नहीं भाई, मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है. And that's how I was there. Like I decided to switch to a DevRel job, and to be very honest,
मेरी first DevRel job was at 5,000 rupees. Like internship, it was an internship, and it was in a Web3 company. No, the first company was not Web3. It was a community management internship. So वहाँ से I was getting around 5,000 to 10,000 के बीच में कुछ, that was a stipend. And that was because of the, like, you can say, my open source contributions and my community management skills. So that was my first internship, and then I switched to a Web3 company wherein it was Tezos. So Tezos, if you know, Tezos is a protocol, and they have a great user base, and yeah. So वहाँ से I got the internship as a DevRel, and I did around 8 months वहाँ पे भी, and I left, and then I joined Keploy, which is an API testing platform. Some तुम ये देख रहे हो कि just because I cleared LFX, also I had a community. Also, I was creating content over YouTube and like stuff like all the social media handles. वहाँ से I got a lot of experience. Um, like, and the selections were ran like धड़ाधड़ एक इंटर्नशिप छोड़ी दूसरी मिल जाती थी दूसरी छोड़ी तीसरी मिल जाती थी, राइट. सो इसी के लिए आई एम हेयर टू गाइड यू, एंड थोड़े से मैथ्स बताऊंगी कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिर्फ जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं दे कैन ओनली डू डेवरल, या काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आई एम नॉट इनटू टेक, आई एम डूइंग बीएससी or I am doing BCom or so certain sort of that. Should I become a developer? उसका आंसर भी दूंगी. But the main things that I can see here, like from starting from like Habitat, which was my first company, and till Asset Mental, because Zomato में I'm an SD, and that is again through a hackathon. एंड मैं हैकाथॉन्स वगैरह में ही बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी अपने फर्स्ट ईयर में ही, एंड लाइक लिटरली हैकर नूडल से ही मेरे को डायरेक्ट ऑफर आया था. सो इट वाज अ डेवलपमेंट बेस्ड राउंड और डेवलपमेंट बेस्ड thing. It was a direct offer. So if you are participating in she builds, I would suggest take part in hackathons. ये अलग बात होगी because यहाँ से you get a lot of exposure, right? And eventually you can do great in by participating in these hackathons. So yeah, basically, so let's come to the definition of a DevRel. आजकल बहुत बूम में होगा ट्विटर पे, लाइक लोग बहुत पोस्ट करते हैं कि मैं डेवरल बन गया या मैं डेवरल बन गई, या डेवरल होता क्या है ये, क्या डेवलपर्स की रेल है या एक प्रॉपर एक वो करियर ओरिएंटेड है, राइट. सो जो जो यहाँ पे बैठे हैं लिसनिंग टू मी, आई होप, मुझे पता है कि सब नहीं सुन रहे, बट जो लोग भी सुन रहे हैं, आई वॉन्ट an answer from you that what according to you is a DevRel. So how do you define a DevRel? कमल इज सिंग डेवलपर रिलेशन, ये तो फुल फॉर्म हो गई. यू आर राइट. पीपल गूगलिंग. ओके. Redefining developer experience, someone with good knowledge of both are developing networking. Yeah, Tamal, pretty much. Managing developer operations people. Oh, managing community and developers with community services, certain sort of that.
सो यहाँ से मेरे को पता चल गया तुम सुन रहे हो, ठीक है। सो I define a DevRel as a person. So DevRel is developer relations. So I define DevRel as a person who can code, who can create content, and who can manage a community. So अगर ये तीन चीजें एक बंदा कर लेता है, दैट इज अ डेवरल। अब ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, बट दीज थ्री थिंग्स सफिशिएंट नहीं होती। So let me tell you why. Developer relations is an umbrella term. Now, अब इसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें तुम्हारी कम्युनिटी मैनेजमेंट आ सकता है, इसमें इमेजिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है, या इसमें एडवोकेसी हो सकती है, प्रोडक्ट बिल्डिंग हो सकती है, इसमें बिजनेस मार्केटर्स भी आते हैं काफ़ी बार। इस बार बिजनेस रिलेशंस और लाइक जो बीडी संभालते हैं किसी भी कंपनी के, वो भी आ जाते हैं। देन एक होता है कि दीज लाइक इवेंजलिज्म प्लस एडवोकेसी आ जाते हैं। दोनों प्रोडक्ट बिल्डिंग हो गई, देन इसको इवेंजलाइज कर दिया, राइट। एंड या सो बेसिकली ये चीज होती है। बट अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है, तुमने थ्री चीज कर ली है, तुमने अपनी पब्लिक प्रोफाइल बना ली। सो उसके मैं रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ, हाउ टू बिकम अ डेवलपर। सो जब मैंने स्टार्ट करा था, जैसे मैं बता रही थी कि यूट्यूब पे मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था। यू कैन स्टार्ट बाय लाइक having like creating videos of the projects that you are doing. You can also start with forming communities. You can also start with joining the communities. जैसे I am a GitHub campus support. I am also an MLSA, Microsoft Learn Student Ambassador. So these communities are very helpful for a developer. And so sorry, so basically these help you a lot of times कि तुम्हारी लाइक अच्छी पब्लिक प्रोफाइल बन जाएगी इससे। एंड लाइक ओपन सोर्स कम्युनिटीज जैसे पब्लिक लैब होगी या लेयर 5 हो गया, यहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। दैट मे नॉट नेसेसरी बी द कोड कॉन्ट्रीब्यूशंस, बट इट कैन बी अराउंड डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये भी कर सकते हो, एंड दैट इज आई गेस ग्रेट बिकॉज अगेन इट हेल्प्स यू अ लॉट ऑफ टाइम्स। Yeah, Rahul, I will share the community link after this session, and huh, I'll share that. So, like a proper roadmap क्या होता है कि अगर आपको डेवलपर बनना है, what is a proper roadmap? जो भी चीज करनी है, there is no roadmap for that. You have to just follow your passion and how you are taking things up. जैसे मैंने रैंडम यूट्यूब चैनल खोल के अपना एक डेवरल का करियर बना दिया था, या अपने प्रोजेक्ट्स पे बिल्डिंग करा था तो उससे हो गया था, राइट। सो देयर इज नो पाथ टू फॉलो टू बिकम अ डेवरल। ये मैं पाथ बोल रही हूँ कि कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से तुमको अच्छे से सीखने को मिलेगा। ऑल्सो ट्राई टू मेक प्रोजेक्ट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको एक रियल वर्ल्ड यूज केस दिखता है, like for example you are suffering from PSOD, like काफी बार वुमेन में भी डिजीज आता है। then you are suffering from diabetes, that is very common. You can like have a like solution for that, maybe um like building an app which tracks your blood sugar level, right? So this can be a great solution, right? And then you can take part in hackathons.
because that will give an exposure of building stuff in a short duration time, right? And the most important thing, help people out there, because तुम अगर डेवरल हो, तुमको ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ जाएगा, है jealousy, jealous, right? They're jealous of people succeeding in their lives. Then I guess you won't be a good devil. Because if you are a jealous person, then there is a thing कि हाँ भाई, वो मेंटालिटी हो जाती है कि हाँ भाई, दिस इज नॉट अ गुड पर्सन. Also, create a Twitter account. That is very important. Post about your learnings, post about what you are building, or post about your good stuff. You have taken part in a hackathon, post about this. You have attended this session, post about this. You have given a session, post about that. You have hosted a workshop, post about that. वहाँ से people notice you easily, because that gets a lot of likes, and like that is again a good point. Now काफी अब myths पे आते हैं, of course. So first of all, people think that कि मेरे को डीएसए नहीं आता, मेरे को डीएसए नहीं आता, तो मैं डेवरल बन जाऊंगा या डेवरल की जॉब कर लूंगी. So let me tell you, if you are running from DSA in order to become a DevRel, then I guess you are in a wrong track, because DevRel में भी coding होता है, right? And if you don't know कि like अगर तुम coding normal coding से ही भाग रहे हो, then how would you do things, like how would you survive in the DevRel job? Because the main task is to of a DevRel is to create code, or to create API documentations, or to create test cases, or to write test cases, or to make SDKs, or any sort of things. अगर तुमको ये चीज़ नहीं आती, या तुमको मान लो तुम एक मान लो तुम MongoDB के developer advocate हो, you are a developer for MongoDB, you don't know how to use MongoDB. Do you think that they will hire you anyhow? So if you are thinking to run from coding and to switch to develop because हमें फन आ रहा है भाई, डेवरल की जॉब में फन आ रहा है, मैं तो स्विच मारूंगी या मारूंगा, then I guess you are wrong. You should not do develop. First myth. सेकेंड मंथ आई ऑलरेडी मेंशन, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस्ड लोग ही डेवलपर बन सकते हैं. दैट्स नॉट द केस. ठीक है, काफ़ी बार मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और मे बी दे हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, ज़्यादा नहीं है. दे आर अब इसमें एक्सपीरियंस में ये नहीं, एक्सपीरियंस वो वाला बोल रही हूँ जो प्रॉपर जॉब वाला होता है. कि तुमको एक प्रॉपर जॉब का एक्सपीरियंस है, या तुम एक फ्रेशर हो, राइट? यू कैन स्टिल बिकम अ डेवरल एंड डू ग्रेट, राइट? बिकॉज डेवरल में ऐसा होता है कि पीपल डू हायर यू फॉर योर स्किल्स, दे डू नॉट हायर यू लाइक फॉर द एक्सपीरियंस. हालांकि इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, जैसे सीनियर डेवलपर एडवोकेट्स, then there is senior program manager or certain sort of that. But you are a fresher, you know which position you have to apply for. I was hired for Zomato. I didn't say कि I want to get hired for SDE too, right? Because that is very lame. क्यों बोलोगे, तुमको 2 साल का एक्सपीरियंस है ही नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तुम क्यों बोलोगे कि मुझे SDE2 बनना है, right? You will simply apply for a job. Then सबसे इम्पोर्टेंट, पीपल थिंक दैट कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे ट्विटर पे वो एक अच्छा डेवरल है, या लोग उसी डेवरल को हायर, उसी बंदे को हायर करेंगे.
So let me tell you that is not the case. Again, क्यों नहीं है? I've seen a lot of people doing DevRel with 400 followers or 300 followers. So वो चीज़ नहीं है कि कंपनीज डू सी कि तुम्हारी प्रोफाइल कैसी है, बट दे डू नॉट सी कि हाउ many followers are you having on that channel, right? Secondly, this also depends. अब मान लो कि if the person is hiring for you as a developer marketer, so वहाँ पे तुम्हारा यूजर बेस दैट इज तुम्हारा फॉलोइंग देखी जाएगी, बट नॉट द केस ऑफ डेवलपर एडवोकेट्स या इवेंजलिस्ट, बिकॉज उसमें भी एक चीज़ होती है, इफ यू आर बीइंग हेड फॉर एज सोशल मीडिया मैनेजर, तब तुम्हारे फॉलोइंग देखी जाती है, राइट? दैट इज अ केस. नाउ पीपल ऑल्सो थिंक दैट कि मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को कोडिंग का सी भी नहीं पता, कैन आई स्टिल बिकम अ डेवरल? द आंसर इज यस, बिकॉज I know one person, she is my good friend. She is a great DevRel and she is from BS. She has did Bachelor's of Computer Science. That is like, so you can still become a DevRel, good DevRel. And she has around 10K following over Twitter, which is huge. And and her background is not science, like not a proper coding wala, right? She hasn't done BTech, so she is a great devil. I consider her as a role model of mine. So if you think that कि मेरे को कोडिंग का सही भी नहीं पता, you can still become a devil. सीख के कोई भी बन सकता है. वही तो बोल रहे हैं कि start building your project so that you can apply for these companies, राइट? एंड एक और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तो जैसे तुम कंपनी में अप्लाई करते हो, यू शुड सी कि उसका जेडी क्या बोलता है. काफ़ी बार मैंने ये देखा है डेवरल को एज अ मार्केटर जॉब टारगेट कर देते हैं. दैट इज नॉट द केस. लाइक people think that कि डेवरल एज अ मार्केटर जॉब, बिकॉज डेवरल है ही नहीं मार्केटर वाली जॉब, बिकॉज उसमें कोडिंग ऑब्वियसली इन्वॉल्व होती है. बट अगर आप डेवलपर मार्केटर का बात करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली तो थोड़ा सा मार्केटिंग का एस्पेक्ट आता ही है. डेवलपर इज नॉट प्रॉपर मार्केटिंग, बट certain aspect of marketing is still included in devrel, you can say. अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज. शॉर्टलिस्ट हो गए डेवरल का रिज्यूमे, शॉर्टलिस्ट हो गया हमारा, अब हमारा इंटरव्यू है, राइट? सो मोस्टली जो भी कंपनीज होती हैं, दे आर मेनली 2 rounds ऑफ इंटरव्यूज या 3 मैक्सिमम इफ एचआर इज इंक्लूडेड. तो फर्स्ट राउंड इज अ टास्क बेस्ड राउंड जिसपे आपको प्रोडक्ट के ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा. अब यहाँ पे डेवरल वही लोग हायर करते हैं जिनका कोई प्रोडक्ट होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से जोमेटो डेवरल्स क्यों हायर नहीं करती? एनी रीजन? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है मुझे कि जोमेटो क्यों डेवरल हायर नहीं करेगी या करती है? नहीं करती है. हम्म. हम्म. नहीं, प्रोडक्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट इज नॉट द केस. प्रोडक्ट क्रिएशन के बाद भी लोगों को डेवरल्स की जरूरत पड़ती है. हम्म. राइट भव्या, बिकॉज जोमेटो इज अ सर्विस.
No, Nike one is not started yet. No, Rachit, not the case. Zomato is not into spot product. अरे यार एसडी क्यों हायर एसडी हायर करता है होली कॉम्पिटिशन नहीं हो सो लेट मी टेल यू द रीजन राइट यहाँ पे मेरे को आंसर्स मिल गए बट लेट मी elaborate on that part लोग बेसिकली जो जोमेटो है वो हायर नहीं करेगा डेवलपर्स के लिए द रीजन इज सिंपल बिकॉज उसका कोई डेवलपर टूल नहीं है द फर्स्ट पॉइंट उसका जो टारगेट ऑडियंस है दैट आर नॉट डेवलपर्स वो एक प्रॉपर फूड कंपनी है विच मीन्स उसका जो डेवलपर बेस है नहीं जो टारगेट बेस है दैट इज वेरी ह्यूज सभी उसमें कवर आते हैं नॉट ओनली डेवलपर्स बट हाँ मीन्स वो दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट बेसिकली कैन से जहाँ पर डेवलपर्स फोकस्ड टारगेट बेस आएगा अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट राइट सो वो कंपनीज हायर करेंगी जिनका कोई डेवलपर टूल है या जिनका टारगेट ऑडियंस डेवलपर्स है also one is partially right on saying not a developer community I mean no advocacy I mean, yes, no advocacy would be needed because there is no developer community. But again, certain companies require you to create a developer community from scratch. जैसे ओला है why would ओला need a developer advocate or a DevRel? उन्होंने रिसेंटली अपने एपीआईज लॉन्च करे हैं जिनकी वजह से उनको एक डेवल हायर करना पड़ा था and I was in the process already. I had got offered from Ola as well as a DevRel, but I rejected. Right? So, like, basically, हम ये पॉइंट पे थे कि इंटरव्यूज में क्या क्या पूछ सकते हैं द फर्स्ट राउंड वुड बी द टास्क बेस्ड जिसमें तुमको उनके प्रोडक्ट के ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर तुम ऐप राइट का इंटरव्यू दे रहे हो राइट सो ऐप राइट में you would be asked to build a certain backend service or maybe integrate your website with the backend that मैं एग्जांपल ही ले रही हूँ राइट और कोई और कंपनी है राइट तो उसका एक टास्क बेस्ड राउंड होगा देन इफ यू क्लियर दैट देयर वुड बी सेकंड राउंड इन विच यू वुड बी आस्क्ड कि तुमने करा क्या है उस टास्क में maybe through a presentation or maybe through a like slideshow or certain sort of data you have to explain or a video right then there might be third round as well wherein they can ask your past experience or projects that I have built upon right and I will tell you the reason why I rejected Ola okay so the fourth round last round would be the HR round so these are the rounds in like जो ये पूछे जा सकते हैं अब इसमें मैं टिप्स देती हूँ तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू शुड नो इन एंड आउट ऑफ योर रिज्यूमे तुमने कम्युनिटी में कोई कंट्रीब्यूशन करा है you should know your open source contributions in and out you should know your like projects you should know your hackathons in which you have participated you should know the sessions you have given or hosted right and you should also know the blogs that I have written क्या लिखा है उसमें because yeah yeah so मेरे KPIs it depends key performance like I'm talking about so and that's the thing that's all
according to me. So if you have any questions, you can feel free to drop them now, and I would be happy to answer them. And it was a very impromptu session. मेरे पास कोई slides ही नहीं थी. But I would be given the resources to you, and the communities that I joined, the communities that I learned from. And there is also a conference happening in Delhi. Bhavna is giving a talk there. So do attend that. And it's D2D. So it's developer to developer by CodeScript and CSI. It would be in Delhi like Technological University. And yeah, I'm just sharing the link. If you have any questions, feel free to drop them, and I would be happy to answer them. So let me go. So, Salesh is saying rejected Ola. Why? Suddenly because you were already in, or else anything made you do. Okay. So I rejected Ola because of two reasons. The first was the package that it was offering for a devil. That was only 9 LPA, which is very less, according to me. Because in devil, people earn a lot of money. And when I'm talking about India, so the average salary of a devil is around 12 to 15 lakhs per annum. So उससे मुझे कम मिल रहा था. Secondly, I want to be into Web3 company for that being reason. So these were the two reasons. I had a competitive um, offer from a different company that was a Web3 company, and the package was also good. So I switched to that company that is asset mental. And means okay. Mayank Kumar, can introvert person be removed? Yes. Yeah. Yeah, Mayank, anyone can become a devil. You just need to step out of your comfort zone. Just need to interact with people. Just go to the meetups, attend those, attend to the conferences, and yeah. Okay. How to get started with healthcare projects? Yeah. That is a very huge, very acha use case that I've already talked about. So you should properly research about this, because proper researching is needed. Then become like start with the prototype, build that on a Figma file. Then maybe start with the front end. कि front end कैसे दिखेगा एक health care project का या application का, right? Then maybe रिसर्च की और किसी प्रोजेक्ट ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रखा है, दैट इज वेरी हेल्पफुल. सो हाँ, मीन्स दैट इज थिंग यू शुड नो इन एंड आउट्स, तुम उसमें क्या क्या फीचर्स डालने वाले हो, व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ दैट एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट. Rachita, I've shared the link below. If anyone is not interested in open source, you can get the remote jobs. Um, Yeah, Mayank, that depends upon कि तुमको अगर DSA आता है, for example, if you know DSA, you can still apply for remote jobs. फांग ट्राई कर सकते हो, बाहर वाली. जैसे डबलिन में Amazon है, then there is सिस्को है, अच्छी कंपनी है वो भी. एंड सिस्को का वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है. It is good. So you can still try for remote jobs, and even in India, Atlassian gives you a remote opportunity. So maybe you can apply for that. Miss तुम्हारा का DSA अच्छा है. There's a question in the chat. What was your most used tech stack for projects? Okay. Bhavna, I have worked with many textiles and technologies till now. HTML, CSS is very common. JS. Then I have worked with React.
थोड़ा सा. Then I work with React Native, थोड़ा सा for Android, for the applications, oh sorry, apps. Then I work with C Sharp, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा. And I work with Go. Then I work with Java, programming languages, बता रही हूँ, Python. Then I've also built certain projects in machine learning. Then I have also worked with like Redux, थोड़ा सा. Then also I work with like normal um, React I've already talked about, chicken. And I work with Make, GitHub Actions, then YAML. Then I also work with Markdown, जो readme में तुम देखते हो, right? For a documentation. Then I've also worked with SDKs. I've built SDKs, right? Then yeah, I mean say इससे पे काम. Also the blockchain, means I have built smart contracts with the application. Yeah, Silish, go ahead. I think you have some questions. Yeah, hello. Thank you so much, Bhavna. Am I audible clearly? Yeah. Yeah. Thank you so much for giving me this chance. Hello, Natiti, first of all, and good evening, everybody. मेरा नाम है शैलेश ठाकुर and I'm from second year undergrad at GH University College of Engineering, Maharashtra, Nagpur. So Didi, without like talking much about myself, I'll go straight about my question. That few keywords that we kind of get to see over the especially like platform like Twitter, like DevRel हो गया, ठीक है, और फिर डेवलपर एडवोकेसी एडवोकेट वाली चीजें हो गई, फिर एपरेट का आपने कभी नाम लिया था इन द मिडल ऑफ योर टॉक, जब आप अपना इंट्रोडक्शन या स्टोरी बता रही थी अपनी पास्ट की, मतलब हाउ योर डेवरल जर्नी हैज बीन लाइक, यू नो. तो उस मिडिल उसमें जो बहुत सारे अपने टर्म्स वगैरह यूज किए थे, आई थिंक. हाँ, पहले ये प्राइमरली मैं बता देना चाहूंगा कि मैम, सॉरी दी, मैं बहुत पहले से मुझे नहीं आता था. आई मीन टेक के इसमें आई एम कम्प्लीटली कम्प्लीटली न्यू. मतलब मुझे आई मीन टिल फर्स्ट, इवन फर्स्ट ईयर ऑफ माइंड, आई डिड नॉट हैव हैड द टच ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, और लाइक क्या बोलते हैं, लैपटॉप भी नहीं था मेरे पास. देयर इज बीन लाइक फ्यू मंथ्स अगो आई गॉटन इट. तो मुझे टेक की बेसिक मतलब उतनी कुछ समझ नहीं है. नाउ दैट आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीखना. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ कीवर्ड्स है जिसका मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था. डेवलपर लाइक एडवोकेसी हो गई, और डेवलपर डेवरल की आपने बात की थी. तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा एक बार लाइक इफ यू कैन टेक अस थ्रू सर्टेन इंस्टेंसेस, तो मैं इस चीज को अच्छे से पिकअप कर पाऊंगा यार. ऑल्दो आपने इस चीज के बारे में थोड़ी बात की है, बट वो पार्शियल मोड पे था. मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोरो हो गया, इस चीज को बता सकती कि आप है क्या एग्जैक्टली ये डेवरल है क्या, और लाइक हाउ वन इज सपोज्ड टू गेट इनटू इट. मतलब अगर थॉरली मुझे जाने की कोशिश करना चाहूँ तो मैं कैसे इस चीज को जान पाऊँ. Sure. आई होप. हाँ, Yeah, no problem at all. आई होप. थैंक यू, So, थैंक यू. जो मैंने बताया था कि डेवरल एक अम्ब्रेला टर्म है. सो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. एडवोकेसी आता है, देन इवेंजलिज्म आता है, देन देयर इज कम्युनिटी मैनेजमेंट, एंड देन देयर इज मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ग्राफिक डिजाइनर, और ग्रोथ मैनेजर्स, और सर्टन सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी मैनेजर्स. सो उसमें सब चीज़ें आती हैं. So advocacy is the one who build the product, like who contribute to ओके. the product, right? जैसे for example, तुमने एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन बनाई. तुमको उस प्रोडक्ट को डेवलपर्स तक पहुंचाना है, या यू वांट कि डेवलपर्स शुड नो ये प्रोडक्ट क्या करता है. So the first go-to person would be the developer advocate. अब वो क्या करेगा? वो फीडबैक क्रिएट करेगा लोगों से. वो बोलेगा तुम इस एप्लीकेशन को यूज करके बताओ, और डू यू थिंक दैट द फीडबैक्स आर नीडेड, मतलब हाँ, are needed. हाँ. So they will work upon that. Means वो शायद उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके he or she will work with that product, और एक ब्रिज क्रिएट कर देगा between developers and the product, right? सो एज एन एडवोकेट, डेवलपर एडवोकेट की अगर बात करें इन जनरल, तो लाइक वो एडवोकेट बेसिकली हेल्प द कंपनी टू
एस्टैब्लिश दिए प्रोडक्ट्स जो उनके लॉन्च हो चुके हैं मार्केट में। और आपने एक और अच्छी एक बात बताई थी इन द मिडल ऑफ योर टॉक कि डेवरल इज आल्सो काइंड ऑफ मार्केटिंग, इज इट राइट? No, no, it is not the proper marketing, but certain aspect of marketing is being included in DevRel. बट I've gotten to know about like रिसर्च के बाद में इसको देखा तो like it was pure written over there कि डेवरल is a kind of marketing only. I mean, partial. Marketing, it's not marketing, it's like proper है वो नहीं, proper marketing नहीं बोल सकते because you code in that. प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है, बट certainly it depends upon the company कि उनका जेडी क्या कहता है. For some companies, they have the managers as the marketing managers. For Mhm. some companies, they have the engineering managers as the reporting managers. The devils have to report to. So it depends upon the company, but it's not the like complete marketing job, according to me. Okay, Partial. on one of the last question of mine, that how long did it take you to be the complete product of DevRel? I mean, in what sense कि जितने सारे टेक्स्ट टैक्स आपको लर्न करने थे और आपको बिल्ड करना था टू द लेवल ऑफ गेटिंग टू बी फिटेड इन एनी कंपनी लाइक जोमेटो एपराइट हो गया किसी भी, तो कितना टाइम आपको बेसिकली लगा था थॉरली एक Yeah. पर्टिकुलर उस चीज के लिए बनने के लिए? और कितने सारे मतलब टेक्स्ट टैक्स ऐसी जो मेजरली थी, आपने हालांकि बात की उस चीज को, बट नाउ दैट आई एम राइटिंग इट डाउन तो मैं चाह रहा हूँ बट अब थोड़ा सा बात कर ले उस चीज के बारे में, देन इट विल बी बेटर फॉर मी। थैंक यू। Sure. So यार टाइम तो पूरी जिंदगी होती है, वो लर्न थ्रू आउट योर लाइफ. सो मेरा तो ये था कि मेरे को चीजें मिलती गई, आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग दैट. मेरा अभी जो जोमेटो में है दैट इज गो, एंड सर्टेनली रूबी एंड रेल्स, तो पीपल लाइक आई ओके। लर्न फ्रॉम दैट. सो इट डिपेंड्स कि तुमको कितनी जल्दी चीजें समझ में आती है. And the best way to like judge it is to build a project. Like कुछ भी बनाया तुमने, कुछ भी सीखा, मे बी यू आर लर्निंग ब्लॉकचेन, तुमको ब्लॉकचेन का आया कि नहीं नहीं मैं तो वेब3 ब्लॉकचेन सीखूंगा. सो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, right? So that could be really helpful. And start giving mock interviews to your friends. वहां से तुमको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा. मोस्टली लोग कहते हैं कि डीएसए के लिए मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस. डेवलपमेंट में भी यू कैन टेक मॉक इंटरव्यूज. लाइक पीपल कैन आस्क अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, ये तुमने कैसे बनाया. आई होप दैट आंसर्स. हाँ हाँ, वेरी फेयर, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। So समझ. anyone, हाँ जी भैया. yeah, Yep, yep. Me. Hi, Unitidi. I think I had seen you at Triple IT Delhi. So my question was like, so you told that you had started from LFX. तो जैसे हम LFX में देखते हैं तो LFX में like बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी क्लाउड रिलेटेड. जैसे कोई हाइपरलेजर पे होता है, कोई क्यूबरनेटिस पे बहुत ज़्यादा होता है जिसमें बहुत सारी रेपोज होती है. सो हाउ डिड यू गेट थ्रू दैट LFX? तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज प्रीटी श्योर कि मैं क्लाउड में तो होंगी नहीं, या मेरे को क्लाउड के प्रोडक्ट समझ में नहीं आएंगे क्लाउड नेटिव के, बिकॉज आई वाज नॉट इनटू. हाय टू यू वर टॉकिंग. हाँ, आई गेस ही इज टॉकिंग अबाउट सोलाना हैकाथन. हाँ वही है. सोलाना हैकाथन. सो लाइक मेरे हिसाब मेरे को पता था कि मेरा क्लाउड नेटिव में नहीं होने वाला, तो आई अप्लाइड फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट. सो इट डिपेंड्स कि तुम किस प्रोजेक्ट के लिए काम अप्लाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मशीन लर्निंग like workload agent. That is the project and that was sponsored from IBM. तो मेरे को पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बिकॉज आई हैड इनर गट. एंड ऑल्सो मेरे रिज्यूमे पे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स थे, सो विच आई अप्लाइड फॉर. मैं 3 जगह अप्लाई करा था. मैंने रिस्क 5 में अप्लाई करा था. मैं आई गेस वो सेमीकंडक्टर्स का था, कुछ प्रोजेक्ट था. देन आई अप्लाइड फॉर दिस वन प्रोजेक्ट कॉल्ड रिस्क 5 का ये दूसरा प्रोजेक्ट था. एंड देन आई
applied for this Open Horizon. So वहाँ दोनों से मेरे को रिजेक्शन आ गया था, but I got selected for this like Open Horizon. So like it अच्छा depends ओ कि कौन से प्रोजेक्ट पे हाँ, आप अप्लाई कर रहे हो एंड आपके रिज्यूमे पे अच्छा कौन। मतलब हाँ जी। आपका ओपन हॉरिजन में सेलेक्ट हुआ था, तो ओपन हॉरिजन वाले एक्चुअली कुछ लिखते हैं कि आप एलएफएक्स से डायरेक्टली मत अप्लाई करो, मतलब दे गिव अ डिफरेंट लिंक। नहीं 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 नहीं, दे डू नॉट। अब का तो नहीं पता मुझे, बट उस टाइम पे एलएफएक्स से ही अप्लाई करा अच्छा। था। एंड मेरे कवर लेटर पे ऑलरेडी सारे एक्सपीरियंसेस थे, एंड कवर लेटर एंड रिज्यूमे वाज द मेन थिंग। मैं जो भी चीज़ें के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल इफ यू अप्लाइंग फॉर लाइक वेब प्रोजेक्ट्स इन एनरिफिक्स, तो वहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट्स सारी होनी चाहिए, उसके लिंक्स वगैरह रिज्यूमे पे। यार तुमने कौन कौन सा टेक स्टैक पे वर्क कर रखा है वेब पे, सो वो लाइक लिखा होना चाहिए। एंड पास्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में भी अगर तुमने फ्रंट एंड डेवलपर कहीं काम करा, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सो हाँ, ये चीज़ है। आई होप दैट आंसर्स। यस इट इज। Anyone is having more questions, or I don't see any question in chat now. So yeah, I guess we are done with questions. So folks, if you don't know, we are also running a hash note giveaway. So you can write blog uh, on what you have learned in this session, or just a summary blog of all the sessions, and tag hash note and hashtag shebuilds. Top three winners will get hash note t-shirts. So, and it is a very good way to enhance your writing skills as well. So you can Hmm. try writing And more blogs and share on Twitter. that is also a one C for becoming a DevRel. Yeah, plus yeah, you are contributing to content part, so it will really help you. Yeah, and folks, if you like the session, do tweet it out and tag me, tag she builds, tag Bhavna, tag Bhavya. They are being a great host, and like tag kar dena, but that is our the thing. If you like the session, do follow me on Twitter, and कोई भी doubts हैं तुम्हारे तो मेरे को DM करो। मैं DM रिप्लाई बहुत ज़्यादा कम देती हूँ, बट दे देती हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है। And that is my Twitter handle. And if you like the session, एक स्क्रीनशॉट लेके बता देना तुमको सेशन कैसा लगा। नहीं अच्छा लगा तो उसको भी ट्वीट कर देना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द constructive criticism that I get. So yeah, that is the thing. But really glad to be here. Thank you, Bhavna, and thank you, She Builds, for having me here. And looking forward to the hackathon. Yeah, thank you so much, Unnati, for coming here and just take a wonderful session about DevRel. Like it's now it booms, so folks should know about this. What is it, and in and out of DevRel. So yeah, and folks, if you still have not registered for our hackathon, uh, Kanak just shared the link about devfolio link or website link. You can just uh, go to that link and register for the hackathon, which will be from 6th to 7th. So you can just register and take participate in hackathon, build something amazing. Yeah, and we will coming tomorrow with another awesome session. So yeah, till then, thank you folks, and thank you Nati for coming. Thank you so much. Thank you so much for having me. Great learning experience for me as well. Thank you so much. Yeah, take care.